An edge. Was there an edge? That's why there was a bit of a shout from Umar Alam. That was a very quick delivery. Umar Alam these days just cut short his run up as well. And he has cut short his pace as well. It's 9 for no loss. This time pulls the ball. Is it going to be? Oh, short of that square leg fielder. He's such a great fielder. And eventually it's a single. 10 on the board. And let's talk about the score. Abid Nabi chipping in with 45, Sahil Shepi 67. And finally a good touch to the innings by Adil. It goes to 50 of 21 balls. Next ball, drives it on the onside. Another run. First over done, chasing 231. Secretariat Titans, they are 11 for no loss. के लिए तलब किया गया है। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं और कटर्स का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आबिद नबी की बात करें, मात्र 2 खिलाड़ी तेजस के सर्कल के बाहर रहेंगे। एक स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी को प्लेस किया गया था। क्या उनको तेजस के रेखा के अंदर बुलाया जाएगा? जी नहीं, स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी को प्लेस किया गया है और दूसरा खिलाड़ी थर्ड मैन, डीप थर्ड मैन पे दूसरा खिलाड़ी है। तो 2 खिलाड़ी तेजस के रेखा के बाहर है। दूर वाले छोर से आए गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद और लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर गेंद। अंपायर ने फ़ज़ा में हाथ बुलंद किए। यहाँ से अगर हम आबिद नबी की बात करें, हर किसी टीम में एक्सपीरियंस ऐड करते हैं। अगर हम आबिद नबी की बात करें, Absolutely, such an experienced player who has played at ICL level as well. And he's now playing at every moment. If we find out here in Kashmir cricket, just keeps visiting in every district of the Kashmir. Having such a great experience as Paul. Beautiful line. As Danish was just trying to make sure, just playing down to the extra cover region, not getting it there. And a dot ball. It's dozen on the board. And they will love to have Asan Danish just go and chip in with some runs. He's scored 69 in that very first encounter. And they would love to have him some more runs under the belt in this all-important one. Next ball, driven ball. Oh, that's a pretty slow effort. I believe it was Gauhar Rashid who couldn't stop the ball. And that's a first boundary from Ahsan Danish. बिल्कुल शानदार शॉट था। और वहाँ पे अगर हम फील्डिंग की बात करें, खराब फील्डिंग, शूज़ का इस्तेमाल करने की कोशिश, वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आप बॉडी लाइन के क्लोज होते तो ये आप ऐसा अवसर कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि खराब फील्डिंग कहूँगा मैं इनकी जानिब से। That is a very sloppy effort from Gauhar Rashid. And score chips on to 16. Abid Nabi. Once again, Indians over. That is a glorious shot. That is a massive shot. That is a good use of the footwork as well. Just making sure stands tall and plays it over point region second. I believe that's the shot of the day so far. बिल्कुल शॉट ऑफ द डे। जोर से मारने की कोशिश नहीं। अगर हमें शॉट की बात करें, आप देख सकते हैं वहाँ पे टाइमिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है और डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का जड़ दिया है। तो मंशा जाहिर करते हुए अभी भी हिम्मत हारी नहीं है। अगर हम यहाँ से सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, Yes, they are surely in the game. That's a better start they would love to go for. And so far the job is not done for them. It's a massive score. It's a climbing and mountain score to be chased down. 231. Next one, driven. Oh, through the legs. Once again, a very, very temporary effort over there from that midfielder. And that's a boundary followed. And Ahsan Danish is having a gem of a knock. The moment he left in that last encounter is carrying the same. बिल्कुल उसी मोमेंटम को कैरी कर रहे हैं। और यहाँ वहाँ पे अगर हम फील्डिंग की बात करें तो खराब फील्डिंग कर रहे हैं वहाँ पे क्षेत्ररक्षक। चाहे आपने कितना भी बड़ा स्कोर दर्ज किया क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इस प्रकार की फील्डिंग करेंगे तो आप अपनी टीम को खतरे में डाल सकते हैं। 26 for none. Next ball, good ball. And a very good comeback. I believe last ball will be up. And talking about this very over, 15 runs coming. They're going at a run rate of over 14. And the required run rate is just over 11. It's 11.22. And if you are having this kind of a run rate required,
You just need a very, very solid partnership. Next ball, short of length. Omar Alam just used his boot to stop the ball. That's going to mark the end of over. 2 done. Secretariat Titans Chasing 231. They're 26 for none. ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दे और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार, ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। Full toss, beautifully stuffed at the wideish mid-on. Some changes being made in the fielding. Abid Nabi continuously stands in the slips. There is a short third man, a backward point, a straight point, a covers, and a mid-off. That is a shot. That is a marvelous shot. Just making sure reaching the pitch of the ball. Ehsan Danish once again is having a song. He is having a song of his innings. Another boundary to him. It chips on to 20 and score goes past 30. It's 31 for none. And Ehsan Danish is a wonderful cricketer. He is indeed a wonderful batsman. Omar Alam, very expensive so far. Next ball takes it onto the full, a full toss onto the pads. All you need to do is just drive it on the onside for another single. That's a good strategy, hitting a boundary and then changing his mind and going for the rotation. 32 for none. बिल्कुल यहाँ से स्कोर बोर्ड को चलाना चाहिए, ज्यादा डॉट गेंदें ना खेलो, जो खराब गेंद मिले और इस बार स्लैश किया है और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। कमाल का शॉट इस बार विकेट मिली थी और मंशा जाहिर करते हुए अगर हम सलामी जोड़ी की बात करें, क्या पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। कमाल के शॉट्स लग रहे हैं और मुझे लगता है ऐसे खतरे की घंटी बज रही है। अगर हम यहाँ से बात करें एक्वाकेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की, अगर हम यहाँ से बात करें, कोशिश रहनी चाहिए सही लाइन के साथ गेंदबाजी करें। उमर आलम मुझे लगता है ऐसे खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है लेकिन अभी खराब गेंदबाजी हो रही है उनकी जानिब से। Indeed, not pulling up to the expectations. His standards are always high. Down the track. Is it gonna go all the way? I believe not. And it just falls in front of the boundary line, short of the boundary line, but he gets a boundary. That is a massive use of the feet. Just watch it. Going down the crease, just making sure reaching to the pitch of the ball. Not clearing the boundary, but just clearing it after a bounce for 4 runs. Back-to-back boundaries. 3 boundaries in this very over. And we are absolutely having a crackerjack of a very great contest. 3 boundaries in the very over. It's 40 for none. Last ball coming up. As again. Oh, will it be caught? Gone. It's gone on the very last ball. It was very slow in air. He could not keep the ball down. Just points a bit off. And Asif departs. The captain departs for 18 of 7. And after 3, Secretariat Titans find themselves 40 for 1. Chasing through 31. बिल्कुल इसी विकेट की दरकार थी यहाँ पे। अगर हम बात करें, सेक्रेटरीट टाइटंस कोशिश कर रहे थे ज्यादा से ज्यादा रन्स बटोरने की, लेकिन इस बार वो एलिवेशन मिला नहीं और अच्छा कैच वहां पे लपका, कमाल का कैच वहां पे लपका गया। तो 40 एक विकेट के नुकसान पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद और रुकर रेट 11.24 के आसपास है। कोशिश नहीं रहनी चाहिए, अगर आप 1-2 विकेट्स भी प्राप्त गवाएंगे, लेकिन 70-80 के आसपास आपको 6 ओवर्स में स्कोर बनाना है। Well, absolutely, they have started the power play well. Just 3 overs only done. They have gone past 40, but losing that very important wicket in the form of the captain, that's a bit of a disaster for them. A bit of a struggling situation is for them. And there are some bad scenes, very, very bad scenes on the field. And we have got a good news. Editor-in-chief in news, promoter in news, and the chief organizer of J&K Qualifier League
is going to come to the commentary box to have some experience with us. That is very great. And here we go. It's going to be 4th over to Abid Nabi. Very expensive in his very first over. He was given a thrash. And he was gone for 15. Let's see whether he comes back stronger or not. And talking about the target, that is a massive one. A mountain-like score. 231. And if you get this kind of a chase to chase down, you need to get a better start. Even though we talk about the score, it is indeed 40. But Captain Ghan and Sajjad is the new man who walks out to the middle. And I welcome Editor-in-Chief in News, Tariq Saab. Tariq Saab, welcome to the box. Thank you, Baba Saab. And Tariq Saab, my first question to you will be, what comes to your mind when you started this kind of a very great initiative and take it in the name of J&K Qualifiers League? बिल्कुल बाबा साहब, जब हमने इस टूर्नामेंट के बारे में सोचा, हमने देखा कि वादी कश्मीर में बिल्कुल जब हम कश्मीर वैली की बात करते हैं, यहाँ पर इस तरह के टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं जो टीवी पे लाइव हो। तो उसके बाद कई लोगों से बात हुई, आपके साथ भी फ़ोन पर बात हुई कि हमें अपने जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान ने मौका नहीं देना चाहिए। पहला यहाँ पर बॉल आ रही है, गेंदबाज गेंद करने आए हैं, इस गेंद को खेल दिया है और एक चौका यहाँ पर मिलेगा। बेहतरीन बैटिंग बाबा, मैं कमेंट्री तो नहीं करता हूँ, लेकिन well, no doubt. Indeed, you know, I will definitely love to have your experience out here in this commentary box. But my question was, you know, you started off, platform about to be promoted to the young guns over here, especially a very, very historical unit if we talk about first half its live telecast. Exactly, बाबा साहब, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, बॉलर आ रहे हैं बॉल करने के लिए, अंपायर के पास पहुंचे, गेंद की है, इस गेंद को भी खेलने की कोशिश की, पैड पे लगी, अपील की यहाँ पर, लेकिन नॉट आउट। बाबा साहब, मेरी कमेंट्री के बारे में और भी आगाज है, क्या मैं भी एक अच्छा कमेंटेटर बन सकता हूँ? Well, you just have to spend some time in the commentary box and it will be some learning processes for you. और जब बात कर रहे थे इस टूर्नामेंट के बारे में, बिल्कुल बहुत सारे दोस्तों से बात की और जो इनके यहाँ पर कॉर्पोरेट टीम्स है, उन्होंने भी कहा कि ऐसा होना चाहिए। हमने आगाज़ किया है, बस अब लोगों का साथ चाहिए। और जैसा आप जानते हैं, इसके बाद भी कई टूर्नामेंट्स हम आगाज़ करने चाह रहे हैं। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फर्स्ट। बाबा साहब, एक सरप्राइज दे रहा हूँ लोगों के लिए और शायकीन के लिए। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फर्स्ट स्पोर्ट्स टीवी चैनल इन J&K. And I believe you are almost getting some success in the same. Exactly. और इस बार बाबा साहब खेल दिया है, मैं मिड ऑन कहूँ या मिड ऑफ कहूँ, मुझे पता है, वो आप कह दें, बाकी मैं ऑन कर। Well, the third man region. थर्ड मैन की ओर 1 रन मिलेगा। And let's talk about the reaction and the feedback of the people of Kashmir Valley. I believe somehow and to this great extent, you have been surely getting success all around the valley. अब बाबा साहब, जैसे आप भी जानते हैं कि you are one of the best commentator in the valley, even I can say J&K, तो आप लोगों को भी ऐसे नौजवानों को मौका देना चाहिए जिन्हें मौका नहीं मिला। और इससे पहले कि मैं बात करूं, गेंदा इसको भी खेल दिया है 6 रन के लिए, नहीं 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। स्कोर बढ़ता हुआ, बेहतरीन बैटिंग दोनों खिलाड़ी कर रहे हैं। 46 हो चुके हैं, 3 ओवर और 4 गेंदें हो चुकी हैं और 50 रन मुकम्मल यहाँ पर। खेलने वाले 2 खिलाड़ी हैं, अरसलान, दानिश और साजिद। और मुझे लगता है कि ये इस मैच की भविष्यवाणी में अगर कर दूं तो जो टीम अभी खेल रही है, मुझे लगता है वो बहुत आगे जा रहे हैं। जी बाबा। And coming back, you know, you started a very great initiative, getting good success, and now you are having some great, you know, plans in the future as well, and you are starting to go with the first sports channel of J&K, I believe. And how far you have been successful so far in achieving that kind of success in having your channel as a very first sports channel of J&K? बाबा साहब, जैसे आप जानते हैं, इंडियन इज द ओनली J&K बेस्ड टीवी चैनल, और क्योंकि ये न्यूज़ टीवी चैनल है, और जब हमने कोशिश की कि हम स्पोर्ट्स करें, क्रिकेट पे जाएं, और अभी हमें जो लोगों का रिस्पॉन्ड आ रहा है, चाहे वो मेरे अपने कोलीग्स हो, बिजनेस फेटर्निटी हो, आप जैसे लोग हो, तो बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्ड है। सो वी आर प्लानिंग विद इन 3 or 4 months वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द फर्स्ट स्पोर्ट्स टीवी चैनल। यहाँ पर कैच हो सकता है और ड्रॉप कर दिया है, बहुत ही अहम था यहाँ पे, और जो गेंदबाज है वो नाराज आ रहे हैं। बाबा, एक चीज मैंने देखी है हमारे खिलाड़ियों में, जो मैं देख रहा था कि कैचिंग बहुत कमजोर है हमारे खिलाड़ियों में। Well, absolutely. Well, it's a lack of practice, it's a lack of training, it's a lack of counseling, lack of guidance. Overall, you just got it pretty right. You know, catching has not been the great.
It has not been up to the marking positions out in Kashmir. Let's talk about the challenges. You started this very first live telecast cricket tournament out here in the form of J&K Qualifier League. Tell us about some challenges that you faced, even though it took you around 3 months to come with the plans, and when you executed it on the ground level. We would love to have some information about the challenges you just faced throughout the very, very, very initiative. देखिए बाबा साहब, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कश्मीर में मैंने एक चीज़ देखी है। यहाँ पर कुछ करने से पहला बॉलर आ रहे हैं, गेंद की है, इस गेंद को खेलने की कोशिश की। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं, यहाँ पर जब भी आप कोई नया इनिशिएटिव उठाते हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। Sure. तो जब भी हमने क्रिकेट स्टार्ट किया, कुछ टेक्निकल इश्यूज आए तो लोगों ने क्रिटिसिज्म स्टार्ट किया। लेकिन आज की डेट में अगर आप बात करें, आप खुद जानते हैं, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। देखिए कश्मीर में आपके पास उतने एवेन्यूज नहीं है। यहाँ पर आपकी जो और इस वक्त बहुत ही बड़ा छक्का मारा है बाबा आपके ऊपर से, सर के ऊपर से, इनके ऊपर से 6 रन। Wow, what a shot! That is Hassan Danish for you once again. I believe. मजेदार है। Well, this ball has surely gone out of the ground and has it done some damage to the cars over there. Well, that is massive from Hassan Danish. He goes on to 36 of 17. जो आप बात कर रहे थे उसका जवाब, जो जब तक गेंदबाज के पास गेंद आती है, जो आप क्या, तो मैंने कहा क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, लेकिन अभी हमें जो एप्रिसिएशन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने नाज़रीन के लिए खुशी देंगे। फिर एक बार बाबा और एक छक्का, यहाँ पे छक्कों की बारिश। It's raining sixes. It's raining sixes. That is a towering one. That is a monster shot from Hassan Danish. Wow. It's 42 not out of 18 ball, just hit 63 for 1. And Secretariat Titans. ये जो शोर लोगों का नीचे आप सुन रहे होंगे, और इससे पता चलता है कि लोग कितने खुश हैं, मुतमईन हैं। Absolutely. It's a remarkable scene. Next one, Paytm. What a great comeback for Umar Alam. He says Tata bye-bye. Wow. That is great separate. This is absolutely unbelievable scenes. The dangerous man gone. It's 63 for 1. And Tariq sir, one more point I would love to discuss over. In every field, it's called if you get more of the criticism. You are starting an initiative, you are starting a business, you are starting this or that. You will definitely find many critics, many criticism, much of criticism to your job. You got the criticism, but that criticism you believe is giving you some great, efforts, some kind of challenge to work more on the same. Even though Baba Sahab, I'm ready to accept those criticism, criticize whatever it is. My planning is just to start the first TV channel, sports TV channel, so I can give a platform to young buddies, young buds. और आपने खुद देखा कि जो हमारे बच्चे भी खेल रहे हैं, जो नौजवान खेल रहे हैं, कितने खुश हो रहे हैं जब वो टीवी पे खुद को देख रहे हैं। और आपने देखा कि LBW की बात करें, हम रन आउट की बात करें, और जब एक खिलाड़ी LBW के लिए अपील करता है तो उसमें अंदर कितना जोश आता होगा, उसको ये लग रहा होगा कि सच में मैं एक इंटरनेशनल मैच खेल रहा हूँ। हाँ, अभी भी मुझे लगता है बाबा साहब, शायद मैं ज़्यादा कह दूँ, लेकिन डिसिप्लिन की थोड़ी सी कमी हमने देखी है, वो हमें ठीक करना होगा। क्योंकि जब आप टेलीविजन पे चीज़ें दिखाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमारे खिलाड़ियों को भी जो है वो ख्याल रखना होगा। और हमने ये भी देखा यहाँ पर जो लोग शायकीन आ रहे हैं वो इसीलिए आ रहे हैं कि हम ये टीवी पे तो देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में अलग ही मजा है। And talking about the technology, cameras, talking about system, talking about live coverage, you still believe there are much to work upon, and so that we get it better in the coming future? Exactly, बाबा साहब, वेरी ट्रू। मैंने वही कहा, जो क्रिटिसिज्म था वो ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि कैमरा की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है, कुछ लोग कह रहे थे कि क्लोजअप नहीं है। देखिए, एक कैमरा जो क्रिकेट का होता है, मैं आपको ये बताता हूँ अपने नाज़रीन को, दैट कॉस्ट 3 CR, यानी जो आपका एक प्रोफेशनल कैमरा है दैट कॉस्ट 3 CR। तो आप मुझे पता है कश्मीर में जब लोकल टूर्नामेंट लाइव करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप 3 CR का कैमरा लाइव, जबकि आपके पास बिजनेस नहीं है। और आज जो ANN एक इदारा है, उसने सारा इन्वेस्टमेंट खुद किया है। कुछ स्पॉन्सर्स है इसमें, ऐसा नहीं है, जैसे टाटा का, मैं माफ़ कीजिएगा, मैक्स का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। और उसके बाद भी कुछ स्पॉन्सर्स है। बहरहाल यहाँ पर गेंद आई, ऊपर आती हुई गेंद, सर को झुका लिया, बेहतरीन स्पीड है इस गेंदबाज की। बाबा, इसका नाम जानना चाहूँगा, मुझे लगता है कि अच्छी आबिद नबी। ये तो बड़े नामवर खिलाड़ी हैं, इनकी गेंदबाजी मुझे बहुत अच्छी लगी है। लेकिन और एक चीज़ मैं बाबा साहब आपसे जानना चाहूँगा, मैच की जब हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर हमें अपने प्लेयर्स को आगे बढ़ाना है, नेशनल लेवल पे लेना है, इंटरनेशनल लेवल पे लेना है, तो मैच कम होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास टर्फ नहीं है। क्या, क्योंकि आप एक टर्फ पे खेल नहीं सकते हैं, वो खराब होगा, जो मैंने आपसे भी कल बात की थी। बहरहाल बॉलर आ रहे हैं, इसके बाद आप कंटिन्यू करें। Next ball, just waits, tries to guide, and there is no run. And let's talk about the sponsors. If we talk about the local tournaments out here, we find still a great number of sponsors coming ahead and are just chipping in with some financial support to those local tournaments in the form of organizers. But
Here, such a great initiative, a brand and a grand initiative. You believe sponsors definitely need to come forward to give you a bit of a kind of a support so that you can come pretty better. Next ball down to the third man. Action, it carried all the way. Just a bounce. And it goes to the third man region for one more boundary. First two balls were the dot ones, and this time Sajjad was not going to miss it. Another boundary. It's 67 for 2. Just watched his ball closely. He was trying to thrash it on the onside. Eventually the ball just takes the edge and goes past down to the third man for 4. And roll of sponsors, Tariq Saab. You believe more of the sponsors should come forward, and definitely that will be a kind of bonus. That is a thumping shot. That is a thumping shot. That was powerfully blown, and it goes once again down to the whitish mid wicket for yet another boundary. Back-to-back boundaries, 71 for 2. बाबा साहब, मैं आपको वही कह रहा था कि हमारे यहाँ पर जब हम स्पॉन्सर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कम आते हैं. जैसे TCI मैक्स ने इसमें सबसे बड़ा रोल अदा किया है, और मैं ये कहूँ कि अगर TCI मैक्स इसमें नहीं होता तो इम्पॉसिबल था. यहाँ पर बोल्ड कर दिया है. तो बाबा साहब, क्योंकि कमेंट्री मुझे नहीं आती, उसको कंटिन्यू करें. आपकी आवाज आपने काम कर दिया सर, वो बोल्ड हो गए. यस, अब यू कैरी ऑन सर. ओके, तो TCI मैक्स का बड़ा रोल इसमें है, और कंवल मसाले जो है उनका बड़ा रोल है, और भी हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका इसमें रोल है. लेकिन देखिए, क्रिकेट टूर्नामेंट इस लेवल पे करना, इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए. जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है ये ANN ने खुद की है, और मुझे लगता है अगर हमारे स्पॉन्सर्स सामने आते हैं, मैं 100% नहीं कहूँगा, सिर्फ 50%. बाबा साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पर क्रिकेट करूँगा. और दूसरी बात, आप जानते हैं, जब मैंने टूर्नामेंट्स के बारे में सुना कि यहाँ पे लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख भी फीस लेते हैं, और आपने खुद देखा कि इस टूर्नामेंट का फी क्या था, इन्वेस्टमेंट कितनी ज़्यादा है, कितने लोग इससे जुड़े हैं. और दूसरी बात, जब आप बात करते हैं क्रिकेट की, तो इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं चाहता हूँ ये एक टीम बने, एक पावर बने, क्योंकि हमारे बच्चों में, हमारे जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, इनमें टैलेंट की कमी नहीं. आपने खुद देखा कितने पावरफुल शॉट्स मारते हैं, कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग में जान लगाते हैं. लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारी जो यहाँ की सिचुएशन थी, उसने हमारे खिलाड़ियों को कभी आगे आने नहीं दिया. बट अगर बाबा साहब आप जैसे लोग आए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ जितना ANN से हो सकता है हम सपोर्ट करेंगे. और आप जानते हैं कि अभी देखा जाए OTT सैटेलाइट लेवल पे, TV पे देखा जा रहा है, जिसमें जियो आपका है सेट टॉप बॉक्स, आपका टाटा स्काई है, टाटा प्ले है, वोडाफोन है, आइडिया है, केबल TV है, और सोशल मीडिया पे लाइव है. तो हम इतना तो कर सकते हैं, लेकिन स्पॉन्सर्स का बड़ा रोल है. अगर इसमें स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे तो बड़ा मुश्किल हमारे लिए भी होगा. और फैशन फिस्टा का भी नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की जिम्मेदारी ली, और हर मैच में वो मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं. जी. And talking about different types of sports, played here in Kashmir, likes of cricket, likes of volleyball, likes of football, likes of hockey. Would love to know, our viewers will also love to know, why you chose only this kind of sporting event, that's cricket, to just give it a kind of a live telecast. बाबा साहब, शायद आपने देखा नहीं होगा, लास्ट ईयर हमने फुटबॉल भी लाइव किया था. लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कश्मीर में इसके दीवाने ज़्यादा है. बनिस्बत आप बात करें फुटबॉल की तो उसके देखने वाले थोड़े से कम है. और हमने लास्ट ईयर वो भी लाइव किया था, बड़ी अप्रिसिएशन मिली. और आपने जो बात एक कही थी वो स्पॉन्सर्स की, देखिए कोई भी प्राइवेट इदारा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी उनको पर्सनल सपोर्ट हो, अपने फाइनेंशियल कितना भी उनको अपना सपोर्ट हो. लेकिन जब तक स्पॉन्सर्स आगे नहीं आएंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे. तो हम यही उम्मीद करेंगे स्पॉन्सर्स आ गया और हम प्रॉपर एक जो है स्पोर्ट्स के हवाले से एक टीवी चैनल स्टार्ट करें जिसमें बहुत बड़ा रोल जो है यहाँ के लोगों का रहेगा. And let's talk about the prediction. Prediction of the sponsors. We have given it a very start. The league is on. Almost we're halfway done. You believe there is sponsors coming your way. You are getting phone calls day by day. You are getting good reactions from the sponsors. Have you been a bit successful in having the claim as far as sponsors are concerned? बाबा साहब, मैं स्पॉन्सर्स पे उतना ज़्यादा वो फोकस नहीं कर रहा हूँ जितने हमारे इसमें स्पॉन्सर्स है दिया है ना, क्योंकि इसमें जो हम देखते हैं यहाँ की बिजनेस भी काफ़ी सफ़र कर चुके हैं. आप 10 या 20 हज़ार या 50 हज़ार पे इस तरह के टूर्नामेंट में स्पॉन्सर नहीं ले सकते, हम वो भी समझते हैं. और जब आप ज़्यादा स्पॉन्सर्स लेते हैं तो वो भी ठीक नहीं रहता है. हमारी कोशिश है कि अगर हमारे पास 2-4 बड़े स्पॉन्सर्स आते हैं बस वो चले तो ठीक है, बाकी जो हमारा चैनल है वो खुद बाकी सब कुछ उठाने के लिए तैयार है. और इंशाल्लाह जो आने वाला अगला टूर्नामेंट है जिसकी आपने भी अनाउंसमेंट की थी, जो बहुत जल्द हम जिसके बारे में अनाउंस करेंगे, उसमें भी हमारी यही कोशिश है कि उसमें जो इक्विपमेंट्स है वो इससे ज़्यादा हेवी हो. इवन कि मैं आपको ये भी एक गुड न्यूज़ दूं कि हमने उसके लिए ऑर्डर भी कुछ इक्विपमेंट्स किए हैं. उम्मीद करेंगे जो LBW है वो प्रोफेशनल वे में दिखाया जाए, रन आउट या बाकी चीज़ें. तो कहते हैं ना अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या. And talking about the talent of Kashmir, if personally ask you, sir,
You believe there is abundance of talent as far as cricketers of Kashmir Valley are concerned, but they need a platform like ANN News have provided them. बाबा साहब हमारा प्लेटफॉर्म तो तैयार है। मैं कहता हूँ जहाँ पे आपका ये साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर जहाँ पे आप चाहते हैं ANN तैयार है। और यहाँ पर एक बड़ी अपील करते हुए खिलाड़ी लेकिन नॉट आउट करा दिया, क्या यहाँ पे वो जाएंगे थर्ड अंपायर की ओर? नहीं। तो बाबा साहब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम तैयार हैं। हमें अभी फोन कॉल्स आ रही है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं साउथ कश्मीर में करें। यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी से मुझे कुछ फोन कॉल्स है, वहां टूर्नामेंट हो रहा है वो लाइव करें। नॉर्थ कश्मीर से फोन आ रहा है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इन अपने ही टूर्नामेंट करें, क्योंकि आप हर कोई टूर्नामेंट लाइव नहीं कर सकते। यहाँ पे बड़ा शॉट खेला है, गेंद जाएगी 4 रन के लिए और देखना होगा 4 रन मिलेंगे कि नहीं। बिल्कुल मिले। और यहाँ पे जबरदस्त खेलते हुए हमारे नौजवान, जो आप बात कर रहे थे, देखिए टैलेंट की कमी बाबा साहब नहीं है हमारे कश्मीर में। मैं कश्मीर की बात करूंगा, जम्मू की नहीं। हम देखते हैं कि जब आप टनल पार करते हैं टैलेंट बहुत ज्यादा है उनके पास, वहाँ पे उन्हें मौका दिया जाता है। वहाँ पे काफी ज्यादा करीबन 20 से 25 टीवी चैनल से जहाँ पर हमारे नौजवान को मौका मिल रहा है और वो बाहर भी जा रहा है, लेकिन हमारे नौजवान को मौका नहीं मिल रहा। क्यों मेरा यहाँ का खिलाड़ी बाहर जाए? और मैं आपको बता दूं कि आज की बात बाबा साहब 3-4 मेरे एक अंपायर को आए हैं जो बाहर की टीमें हैं, बड़ी टीमें। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर आना चाहते हैं, हमने टूर्नामेंट देखा है, हम इसमें खेलना चाहते हैं। अब आप इमेजिन करें जब बाहर का यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली का टीम यहाँ खेलने आए तो कितने हसीन मंजर होगा, कितना अच्छा होगा। तो मुझे लगता है अब हमारी बाहर की टीम को यहाँ बुलाना होगा और यहाँ पे हमें उन्हें मौका देना चाहिए, बशर्ते कि हमारी टीम बाहर जाए। Absolutely, and और हमारा मौसम भी बाबा साहब काफी सुहाना होता है। Absolutely, that's loving, so loving. If we talk about atmosphere of Kashmir, still we will go for you. Next ball, beauty of a line. That is a peach of a line. Batsman misses, and so does the wicketkeeper as well. I believe there was an outside edge, and the ball in a hurry goes to the fence for 4 runs. 83 for 3. Secretariat, that was not an outside edge. It was an inside edge. And to the right of the wicket keeper, the ball just travels to the fence for 4 runs. और बाबा साहब अब मैं आप दोनों के बीच में सकलैन, कुछ लोग सकलैन मुश्ताक भी लिख रहे थे, तो मैंने सोचा ये सकलैन है को उनको देखा भी काफी यंग है। देखिए जब आप ऐसे बडिंग टैलेंट को मौका देते हैं और जब वो कमेंट्री बॉक्स में बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। खिलाड़ी अपने आप को टीवी पे देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश होगी जितने भी हमारे खिलाड़ी है हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। देखिए मैं तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन खाली टीवी चैनल होने से एक टूर्नामेंट नहीं होता है। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, हार्ड वर्क है। बिहाइंड द कर्टन आप देखते हैं कितनी बड़ी टीम काम कर रही है। तो मैं चाहता हूं बाबा साहब हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी मैं फिर एक बार कहूंगा, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अगला टूर्नामेंट जो होगा बाबा साहब वो इससे भी ज्यादा प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा। आगे मैं माइक देता हूं सकलैन को। Thank you, Tariq sir, for your valuable words. An announcement being made in a very quick nick of time. You are going to have a very, very big surprise by ANN News. बिल्कुल, अगर हम ANN न्यूज़ की बात करें काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, आगे भी इनकी प्लानिंग यही है और एक अच्छा है। अगर हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट रहेगी, इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अभी इनकी, और स्पॉन्सर्स के बारे में भी बात कर रहे थे। तो बिल्कुल आप यहाँ से हर किसी का एफर्ट है, ये ANN न्यूज़ अकेले काम नहीं कर सकती, इसके लिए पूरे एफर्ट्स प्लेयर्स को भी अपना साथ देना चाहिए और जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी साथ देना चाहिए, तभी हमें इससे एक और बड़ा टूर्नामेंट करा सकते हैं। अभी तक बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और दाद देनी पड़ेगी ANN की, जो ऐसा इनिशिएटिव, पहला ऐसा इनिशिएटिव लिया है। अगर हम इस J&K क्वालिफायर लीग की बात करें, आप नबी चलेश्वर में एग्रीगेट के साथ हल्के हाथ से खेला, वहां पे शॉर्ट कवर के क्षेत्र में गेंदबाज खुद गए, गेंद को कलेक्ट किया, कोई भी रन नहीं मिला और 83 3 विकेट के नुकसान पे रुका रेट अब 12 की हो गई है। जो रुका रेट पहले 11.5 के आसपास थी, अब वो 12.16 के आसपास हो गया। अब यहाँ से बड़े शॉट्स लगाने पड़ेंगे, एक पार्टनरशिप की दरकार है। यहाँ आप देख सकते हैं अपील, जोरदार अपील हुई थी उमर आलम की, लेकिन नकारा वहां पे अंपायर ने, और 83 3 विकेट के नुकसान पे इस बार आखिरी गेंद डॉट गेंद और 8 ओवर इख्ताम पजीर हो चुके हैं। 83 3 विकेट के नुकसान पे आबिद नबी आज अपने कोटे का 4 ओवर कंप्लीट कर चुके हैं, 37 रन कंसीड किए और 1 विकेट अभी तक उन्होंने प्राप्त किया है। रुकर रेट अब धीरे धीरे क्लाइम होती हुई नजर आ रही है, 12.33 की रुकर रेट हो गई अब यहाँ से। अब भी यहाँ से 148 रन अभी भी जीतने के लिए चाहिए 12 ओवर्स में, तो आसान नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे मोहसिन की बात करें, अब दोनों ने काफी 9 गेंदे, और अगर हम आदिल हुसैन की बात करें 6 गेंदे खेले। अब उनको चाहिए यहाँ से बड़े शॉट्स खेले जाए, क्योंकि अब अगर यहाँ पे रुकेंगे तो फिर दुविधा हो सकती है आपकी टीम के लिए। Well, absolutely, if we talk about the run rate at the moment, it's just over 10, but talk about the required run rate, it has passed well, even though they find themselves in the very hunt. But Asandan Shah, his wicket is, that was a very crucial wicket. Once again, he chipped it in 42 of just 19, but very unlucky, just not crossing over.
Adil Hussain and Mohsin Trumbu. They are the two not-out batters over there. 83 for 3 and 148 required from the remaining 12 overs. Next ball, cover Rashid into the very first over of his quota. First ball played to the short cover is for no runs. And as Tariq Saab was mentioning, a big surprise coming in the future after this league gets done. So I believe young cricketers are definitely a great platform and they have to showcase their skills. बिल्कुल, अगर हम एन न्यूज की बात करें, तारिक साहब बात करते हैं, इस बार कमाल का शॉट खेला है और गेंद सीमा रेखे से बाहर 4 रन के लिए। इस बार थोड़ी सी लाइन से चूके और सही नसीबी बल्लेबाज ने गेंद सीमा रेखे से बाहर 4 रन के लिए। और अगर हम तारिक साहब की बात करें, अभी बात कर रहे थे टूर्नामेंट्स के रिलेटेड, तो आपको क्या लगता है ऐसे इनिशिएटिव्स होने चाहिए और सामने आना चाहिए? बिजनेस टाइकून्स की अगर हम बात करें तो सामने आना चाहिए। अभी एनए ने शुरुआत की, क्या आपको लगता है बाकी चैनल्स को भी ये काम करना चाहिए? Absolutely, this is a great initiative in an news channel now turning out to be, just actually the motto is to just come off as the first very sports channel of this J&K. And they have started this initiative and they are getting good feedback. And I believe sponsors, we know that business brands, tycoons over here in Kashmir, they should come in the numbers to the front of this ANN News, just sponsor them. And their sponsorship will definitely play a very vital role. And as promised by Editor-in-Chief ANN News, Tariq Saab, he says that from South, North, Central Kashmir, we're always available. And we are going to provide a very valid platform for the young guns, especially in the game of cricket. Even though last year they have gone for the football as well. And this is the very unique of its kind, historical first step, live telecast of cricket tournament. Next ball, slower one, missing the ball completely. Across the line he was trying to play and not getting it there. It's 88 for 3, last ball of this video, and only 5 runs coming. बिल्कुल, अगर हम बात करें, ऐसे थकने का नाम नहीं ले रहे, वरना अगर कोई एक टूर्नामेंट कराते तो फिर वो फुल स्टॉप लग जाता है वहां पे। लेकिन आप देख सकते हैं इनके ख्यालात काफी अच्छे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे भी इसमें और इम्प्रूवमेंट आए और दिन दुगनी रात चुगनी क्रिकेट की अगर हम बात करें, इसमें और मेहनत की जाए और अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमारे यंग बड़ंग क्रिकेटर्स को मिले। Next ball down the track, tries to play, not getting it there. 10 done, halfway done. We are 88 for 3. Secretariat Titans still 143 behind. Fall of wickets, first 140, second 63, 371. Since then, there has been a partnership of 17, and that is not enough. That is not great enough. I believe you have to surely come something miraculous from Secretariat Titans. One of these two has to take a risk of pulling the long handle. बिल्कुल, यहाँ से रिस्क लेनी पड़ेगी, बड़े शॉट्स के लिए आपको यहाँ से जाना चाहिए, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी। आप इक्का दुक्का से भी काम नहीं चला सकते, यहाँ पे बड़े शॉट्स की जरूरत है। अब कौन सा, या वो आदिल रहेंगे या मोहसिन, अब मुझे लगता है यहाँ से उनको मैसेज भी आई होगी डगआउट से कि अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी। अगर यहाँ से हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, Marala Metro screens continuously on the slips. It's going to be Nazir Tiger. Right arm over. Displays the ball, and these runs are not going to hurt the likes of Iquasar Software Solutions Acclaim. Now let's talk about these two batters. Mohsin is batting on 5 of 12, a very slow innings. Adil 13 of 10, almost a run a ball. You believe Mohsin or Adil, talking about these two, the time has now come for these two. One of them has to go and use the acceleration. बिल्कुल, अब यहाँ से बड़े शॉट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा। अच्छा बैकअप था पीछे और तेजी के साथ यहाँ पे दूसरे रन के लिए पलटे और दूसरा रन भी मुकम्मल किया। अब बड़े शॉट्स के लिए जाना चाहिए, एक खुद रिस्क यहाँ पे लेना है, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी। और जो पहाड़ जैसा लक्ष्य आज इनके सामने थे, मुझे लगता है वो रुका रेडी की अगर हम बात करें, वो इनके दबाव, उनके जहन में जरूर वो दबाव था। Absolutely, required run rate just crossing 13. And if you need over 13 runs to chase the score, and you are 3 wickets down with 91 on the board, that is very challenging. Next ball, and straight to Gauhar in the covers, not for the runs. And if you look at this video, just watch this, 4 balls have been bowled, only 3 runs. This way you are not going through the line.
इस बार शानदार शॉट खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की शीट में, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं तेजी के साथ एक रन चुराया। नजीर टाइगर के पास खासा एक्सपीरियंस है, तजुर्बेकार खिलाड़ी है नजीर टाइगर की। अगर हम बात करें 4 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। He's bowling great. He's bowling great. He's a very experienced all-rounder. Max ball deep in the crease. He goes, cuts it, and cuts for only a single. And that's end of over. 10 done. It was a rather correction in that last over. I just said it was 10. Now this time it's 10. 10 done. 93 for 3. Secretariat Titans. It will be Gauhar Rashid in his very second over. That is up against the likes of Adil Hussain. Not a good shot. The ball just stops inside the circle at the cover and starts off with a dot ball. And the run rate required, that is creeping, that has gone past 14 as well. बिल्कुल, जितना ज्यादा डॉट गेंद आप यहाँ से खेलेंगे उतना जो विकेट रेट है वो 14 के ऊपर हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं डॉट गेंद खेली थी और 3 इस बार बड़े शॉट की तलाश में था, क्रॉस द लाइन घुटना टेक के मारना चाहते गेंद और बल्ले का मिला नहीं हुआ। डॉट गेंद तो कोशिश है बड़े शॉट्स की, लेकिन लग नहीं रहे हैं। अगर हम यहाँ से बात करें आदिल हुसैन की, well, is trying, he is indeed trying. Can we turn out to be the game of cricket as the leveler? Chips in beautifully, and make sure the ball just goes over the backward point region. 4 runs, and it's a much needed boundary, and that's a welcome boundary. 4 runs off the third ball of this over, and Adil Hussain, he cuts the ball and finds the boundary. He goes on 18, and score reaches 97 for 3. Once again, short of length, and this is not going to be problems for Gauhar Rashid. And his variations, he just bowled this very quick delivery. Eventually, the batsman just fell victim of the ball. He was trying to pull it, ball hitting the toe, and Gauhar making no mistake. 4 down. First wicket to Gauhar in Second. It's now sinking as far as Secretariat Titans is concerned. बिल्कुल अब आसान नहीं होगा इनके लिए और ट्रैप में फंसाया है यहाँ पे। अगर हम आदिल की बात करें, आप रिप्ले में भी देख सकते हैं, ये गेंद थोड़ी सी तेज की थी और ऑन साइड के क्षेत्र में खेलना चाहते थे, ठीक तरह से बल्ले पे नहीं आई गेंद, टो पे लगी गेंद और ये आप देख सकते कमाल का कैच वहां पे लपका। और अब डूबती हुई नैया नजर आ रही है यहाँ पे सेक्रेटरीट टाइटंस की। अगर हम यहाँ से बात करें, आसान नहीं होने वाला इनके लिए, क्योंकि पहले दबाव था इनका जब 231 का लक्ष्य इनको मिला था चेज करने के लिए, तो आसान नहीं था, क्योंकि जब आप डॉट गेंदें खेलते तो आपको स्टार्ट अच्छा मिलना चाहिए था वहाँ पे 80-90 के आसपास। अगर आप 6 ओवर्स में बनाते, अगर आप 1-2 विकेट्स भी प्राप्त करते, अगर आप 1-2 विकेट्स भी गंवा लेते तो अच्छा रहता आपके लिए, लेकिन वो कार्य किया नहीं। आप देख सकते हैं 14.36 की विकेट रेट हो गए, 134। आसान नहीं होने वाला, मुझे लगता है अब नामुमकिन सा है इस मुकाबले को जीतना। कोई मिराकली आपको अब इनको मुकाबला जिता सकता, जो मिराकल बार होते हैं नहीं। Yes, you caught it right. Only miracles can save. It's the part of miraculous to come down and play the role. Still a goal for the same, that is Ehsan Danish, who could have been a key factor. That was going great guns, eventually just was bowled by Umar Alam. He just targeted him and finally paid the price. And Yunus Trambu walks out to the middle, getting ready to face Gauhar Rashid. We find Umar Alam in the slips continuously. Short third man, a backward point. There is a deep point. There is a cover inside the circle, and there is a deep mid-off on the onside, a wideish mid-wicket, a deep 5-leg and a square leg. Next ball just deflected it on. Wicket keeper gives the chase and could not stop the 2 batters for going for a single, and Yunus Trambu gets off the mark straight away.
in singles, I believe, Saklan. This is not going to hurt Iquasar Software Solutions, and they are in the game pretty strongly. बिल्कुल आपका कहना सही है और मुझे लगता है यहाँ पे अब टाटा बाय बाय आज हो जाएगी क्योंकि एक और मुकाबला है, बट ये मुकाबला जरूरी जीता था। अगर हम यहाँ से बात करें सेक्रेटरी टाइटंस के, एक मुकाबला पहले हार चुकी है, लेकिन आज वैसा मुकाबला दिखाया नहीं है सेक्रेटरी टाइटंस की। अगर हम बात करें यहाँ से, well, they looked completely out of the game because the way they started their bowling, they were given the thrash at the very top by the likes of Abid Nabi, and then Sahil Shafi chips in with 67. And then a final touch was provided by Adil. And it's a massive score to chase. 231. And Secretariat Titans 4 down with just 99 on the board. You see it to a screens. Abid Nabi is a star of the valley, a great all-rounder. And is a man who can be taken as inspiration for the young guns here in Valley. बिल्कुल आबिद नबी की अगर हम बात करें, डाउन टू अर्थ है, इंसान भी है, काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं छोटे छोटे खिलाड़ियों की। मैंने इनको काफ़ी देखा है क्रिकेट खेलते हुए और हमेशा रेस्पेक्ट देते हैं अगर हम छोटे खिलाड़ियों की बात करें, और उनको प्रेरणा ज़रूर मिलती है। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार का अगर हम बात करें तो रवैया नहीं दिखाते हैं। तो मुझे लगता है यंग बर्डन के लिए वो अच्छा है कि इनिशिएटिव अगर आप यहाँ से इनको अच्छा रवैया दिखाएंगे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एज ए क्रिकेटर अगर हम बात करें। Let's talk about the ICC 50 over Cricket World Cup that's to be started in a very, very short span of time. Who you believe should be the fourth semi-finalists? मुझे लगता है यहाँ से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान और इंडिया, ये लगता है मुझे कि 4 फाइनल्स अगर हम यहाँ से बात करें सेमीफाइनलिस्ट होंगे। तो देखने वाली बात होगी क्या ये मेरी प्रेडिक्शन सही रहेगी या नहीं, बट मुझे लगता है एक प्लस पॉइंट है इंडिया के पास। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट्स आज कर रहे हैं, मुझे लगता है इनसे बचना चाहिए क्योंकि ये आसान काम होता नहीं। जब आप इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो फिर कठिनाइयाँ हो सकती है आपकी टीम के लिए, ये मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें, मुझे लगता है वो फाइनल्स में पहुंच सकती है क्योंकि आज अच्छी अगर हम बात करें उनके 5 खिलाड़ी रैंकिंग में हैं आईसीसी ओडीआई रैंकिंग की अगर हम बात करें, और बाबर आजम वैली के टॉप, अगर हम यहाँ से टॉप खिलाड़ियों की बात करें इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो वो उनमें शुमार होते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है इस बार ट्रॉफी लिफ्ट करने का। Indeed, this is surely going to be a great contest. This one, is it going to go all the way? Oh, Abid Nabi is such a wonderful athlete. Just ran towards his left hand. He is not going to drop the catches anymore. Is such a class player and is such a great fielder as well. And with this we get to the 5. It's 5 down and Mohsin Trambo departs for 10 on the bowling of Nazir. 101 for 5 now. And talking about the catches, if Tariq Saab was also saying it, the catching is a bit of a problem. But if we talk about the high-level cricketers, they're great with the catching. बिल्कुल कैचिंग उनकी शानदार, ये कैच भी आप देखिए और ये देखिए खुद को कैसे पोजीशन में लाया और ये अच्छा कैच लगा, और पता था बाउंड्री लाइन कहाँ पे है। और हमारे जो यंग क्रिकेटर होते हैं उनको पता नहीं होती कि बाउंड्री लाइन कहाँ पे है और पोजीशंस में नहीं आते, और वो मुझे लगता है कि एक रीजन होता है कैच ड्रॉप करने का। मुश्ताक अहमद अब खेलने के लिए आए, अब 15.90 के आसपास रुकर रेट हो गए। अब आसान नहीं हो गए यहाँ से, मुझे लगता है अब यहाँ से मौका है। अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, उनके पास मौका है कि पूरी पारी समेट सकती है अगर हम यहाँ से 2-4 ओवर्स की बात करें। मुझे लगता है यहाँ से ओवर आलम की अगर हम बात करें उनको वापस लाना चाहिए इसके बाद, क्योंकि थोड़े बहुत खर्चीले साबित हुए थे उमर आलम। लेकिन क्या अगर उनका एक कोटा बचा है, उनके एक ओवर बचा है, तो मुझे लगता है उनको जरूर यहाँ पे बुलाना चाहिए क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे आने वाले मैचेस में। आखिरी गेंद, इस बार अच्छी गेंद वहां पे अक्रॉस द लाइन फिर से खेलने की कोशिश, गेंद और लेकर मिला नहीं हुआ। डॉट गेंद 12 ओवर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं 101 5 विकेट के नुकसान पे सेक्रेटरीट टाइटंस की अगर हम यहाँ से बात करें बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले, लज्जत मसाले वाकई लज्जत है।
मुखलिसाना अगर हम बात करें वहां पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस का काम करें, अगर हम यहाँ से मध्य क्रम के बल्लेबाजों की बात करें उनके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेंगे। इस बार लेफ्ट स्टंप के बाहर गेंद, कलाइयों का शानदार इस्तेमाल खेला है वहां पे फाइन लेग के क्षेत्र में और तेजी के साथ दूसरा रन भी मुकम्मल किया। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों की अगर हम यहाँ से बात करें तो इक्का दुक्का से परेशानी होगी नहीं यहाँ से। Absolutely, these ones and twos not going to hurt the likes of Software Solutions. And it's just a matter of the remaining 5 wickets for them. That's why they're just changing the bowling at the regular intervals. Down the leg stump. Is it going to be called as a wide? No, I believe it was brushed with the pads. So a taut delivery. And equation is now 128 of 46. And run rate has gone close to 17. And it looks an uphill task from here onwards to tackle this kind of run rate. Next ball down the track he goes, again missing. And execution of plans, execution of team plans. If we talk about Software Solutions, Umar Alam at the toss did mention, he said that it's a good toss to win and we'll try to post the score on the board, and they have done the same. बिल्कुल वो कार्य किया है। अगर हम बात करें मंशा उनकी यही थी कि 200 प्लस का टारगेट दे। यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्रेटरी टाइटंस की, फिर इनको कठिनाइयां हो सकती है। एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का अगर हम बात करें यहाँ से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की, उनके पास खासा अनुभव है। उनके खिलाड़ियों की अगर हम बात करें, नजीर टाइगर हो गए, आबिद नबी, उमर आलम की अगर हम बात करें, उनके पास खासा एक्सपीरियंस है, उसी का इस्तेमाल करते हैं और एक अच्छे टैक्टिक्स कहूंगा मैं, टॉस जीत के सीधे बल्लेबाजी करना। Played in there. What a wonderful catch. That is what I was telling you. That's the difference between the two. If you have got experienced lands in your team, you are not going to drop the catches anymore. And talking about that catch, if we can have the replay, perfection of the catching and timing of the catching and the sliding of the catching, that was perfect. बिल्कुल गेंद पे निगाह रखी और कमाल का कैच वहां पे लपका। यही डिफरेंस आपको नजर आ रहा है पहले इनिंग्स और इस इनिंग्स की अगर हम बात करें। पहले इनिंग्स में कैच ड्रॉप हुए, स्लॉपी फील्डिंग, और ये रिप्ले में आप देख सकते हैं क्या शानदार कैच वहां पे लपका। आसान नहीं था ये कैच, डिप हो रही थी कि नहीं। देखिए ये देखिए नजर गेंद पे है और स्लाइड मार के कैच लपका। क्या शानदार कैच था ये। An international flavor over there. बिल्कुल कमाल का कैच। और ताजा याद अगर हम इस कैच की बात करें तो बिल्कुल विराट कोहली ऐसे कैच लपकते हैं। That is great. 6 down now. Let's see who comes down to the middle. And Secretariat Titans are losing the grip. They are finding themselves at a very difficult position. It will be their second consecutive loss. And if they lose from here onwards, they will definitely find themselves at the down of the table, at the bottom of the table. And Umar. और अगर हम यहाँ से बात करें इक्वासर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की, मुझे लगता है तगड़ी टीम है, इनके पास एक्सपीरियंस है, तो अगर ये अच्छा क्रिकेट खेलेंगे तो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट में आगे जा सकती है टीम। Indeed, if we talk about the hot favorites of this very cricket tournament, we have got MLA Gymkhana, and we have got Iquasar Software Solutions as well. We have got MCC Nightkai, we have got MACC Kashmir, with which Wasim Raza plays. He got to back-to-back man of the matches. FCC Chanapura, even though they have lost one match, they have got a victory as well, and they are surely turning out to be a strong team as well. And these are the teams I believe they can move forward. Solid Electronic Shopping was also turning out to be some great team, but eventually. And let's talk about Friends 11 Pulwama. Yesterday they played just first match of the tournament, and they got over the victory. And a great news for the team was the captain Shirazwani. He came back to the form, batted well, bowled well, and got man of the match. इस बार क्या शानदार शॉट खेला, स्क्वायर लेग बॉडी लाइन से बाहर गेंद सी मारे के से बाहर 4 रन के लिए। और अगर वसीम रजा की बात करें, 2 हैट्रिक्स ले चुके हैं, तो मुझे लगता है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को पिक करना थोड़ा बहुत कठिन होता है हमारे खिलाड़ियों के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Indeed, you will not find most of the time left arm spinners out here in Kashmir Valley, and it's pretty difficult for the batters to pick him up. That's why he's turning out to be a very successful bowler. He got the first hat-trick of the tournament, and he got 2 back-to-back man of the matches as well. Abid Dabi at was screens, just enjoying the time and standing in the slips. Next ball from Tiger.
That is in there. Is it going to be caught? Fielder coming underneath. Oh, easy catch. That is once again a brilliant catch. Just running forward and positioning himself underneath. है। Royal Concept makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. आपके शहर में सैमसंग लाया है इजी शॉपिंग के लिए एक एथोराइज स्टोर, जहां पे आप अपने घर के लिए ले सकते हैं अच्छे अप्लायंसेस। सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर, जहां आप टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, एसी, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स या एसेसरीज ले सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स विद सैमसंग फाइनेंस प्लस फैसिलिटीज, जो आपकी जेब का प्रेशर कम करेगा और आप अपने घर के लिए मनपसंद अप्लायंसेस बिना बजट कॉम्प्रोमाइज कर ले जा सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं बहुत सारी शॉपिंग और लेना चाहते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, विजिट सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, बेबी बिन, जवाहर नगर। कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप, Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. Royal Concept makes you royal. Royal Concept, Bacha Chowk, Lal Chowk, Srinagar. J&K 190001. कामयाबी बस बैठे रहने से नहीं मिलती, ये मिलती है सही वक्त के सही फैसलों से। आपके फैसलों को कामयाबी के पहिए देने आ चुकी है टाटा की नई डीलरशिप, Kashmir Valley Motor Pvt Ltd, authorized dealers for Tata Motors, showroom and workshop at National Highway Lasjan Bypass, Srinagar. Call 9596 777 133. CLC कोचिंग सेंटर, एयरपोर्ट रोड, परेपुरा। वादी में पहली बार 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ नीट, जेईई और IIT के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी।
अब वादी के तलबा भी कोटा राजस्थान के तजुर्बाकार और मुमताज मुदर्रिसों से CLC कोचिंग सेंटर परिपुरा में पा सकते हैं मुनफरिद तरबियत। यहाँ के तलबा को पहले ही मुल्क के खास इदारों में खासी कामयाबी मिली है। मजीद जानकारी के लिए इन फोन नंबरात पर राबिता करें 9906981888, 9906982888। मुखलिसाना और ताजगी से भरपूर कंवल मसाले, वादी का दर्जे अव्वल और अपना ब्रांड। ये सिर्फ मसालों तक ही महदूद नहीं बल्कि कंवल आप तक जायकेदार अचार और शाही कहवा भी पहुंचाता है। ग़िज़ाइयत और लताफत से भरपूर कंवल मसाले रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल। हम हैं कंवल मसाले। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100% खालिस मसाले लज्जत। ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन खास ज्वेलरी खास लोग ही पसंद करते हैं। कारीगरी ऐसी जो मन को छू ले और खिदमत ऐसी जो दिल को छू ले। तो हमें खिदमत करने का मौका दें और तशरीफ लाएं असावीर ज्वेलर्स, कश्मीर का अपना ब्रांड, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, श्रीनगर। मसाले तो बहुत हैं, पर कश्मीर की कोख से खास चुने मसाले जिनकी ताजगी और स्वाद रहे बरकरार। ऐसे उम्दा मसाले बनाते हैं सिर्फ लज्जत मसाले। आपके one for 8, 16th over in progress. Just watching forward, leaning forward, making sure the ball just comes onto the blade, goes to the short forward short leg, and they chip in for a single. It's 1-1-2 for 8. And let's talk about the required run rate. Just look at it. It's almost a 25. I believe it's completely impossible from here onwards, Saklan. बिल्कुल जीतना नामुमकिन है यहाँ से। और अगर हम बात करें वहाँ से, अगर हम Iquasar सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात करें, मुझे लगता है उनको एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए। जो पार्ट टाइम गेंदबाज है उनसे भी गेंदबाजी करानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले मैच में कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम जरूर कर सकता है। Indeed, they are surely introducing the part-timers as well. Adil now into the fresh over of his quota, very first over. A low down full toss onto the pads, just makes it sure, plays it all along the track for no rounds. Ball slogging it, and it goes for a single. Body language. If we talk about Secretariat Titans, that was indeed in the very much pressure situations right from the start of the chase. Even though they did cut a good start, around 40 runs, they lost the first wicket. But then no capitalization and no implementation of their strategies. बिल्कुल अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 170 रन अभी भी चाहिए। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ से बात करें, जो खराबियाँ रही है, जो परेशानियाँ रही है, उसको जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। जो बाकी टूर्नामेंट्स में अगर इस प्रकार का प्रदर्शन दिखाएंगे तो मुझे लगता है फिर कठिनाइयाँ हो सकती है इस टीम के लिए। तो आगे इसे बहुत काम करना है। अगर हम बात करें सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें तो 16 done, 115 for 8, 4 runs off the over.
उम्मीदों पर खरा उतरना हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए जदीद तकनीक से तैयार करदा लज्जत मसाले, जिनमें मिठास से भरा हुआ लज्जत शाही कहवा और लज्जत मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला और बिरयानी मसाला आपके पकवान को 4 चांद लगा देते हैं। वादी कश्मीर के बेहतरीन और 100%। Here we go. Just guides it. The good stuff. Omar Nabi. And now it's just towing. They just started towing with the batters of Secretariat Titans. It looks like these part-timers are just having some great laughs. The way they're just bowling, not giving runs, and tailenders exposed pretty early, just having 17th over in progress for Secretariat Titans. They're finding themselves completely helpless. Axwell cuts beautifully, and Umar Alam does the job. It's a single, and singles. Just look at the required run rate. It's past 31, and Impossible. still not having kinds of long handles, no acceleration, knowing that we are out of the reach, but still they may give themselves a bit of a batting practice. Good pull. Chance up and out. Oh, Gauhar Rashid. Not to the top of the ball, and eventually they go for a single. It's 8 for 8. बिल्कुल टेल की अगर हम यहाँ से बात करें, बड़े शॉट्स के लिए नहीं जा रहे हैं, और मुझे लगता है वो टैक्टिक्स के अगर हम यहाँ से बात करें, वो लैग कर रहे हैं, वो पावर हिटिंग अभी लैग कर रहे हैं टेलएंडर्स की अगर हम यहाँ से बात, लेकिन उनको दोष नहीं देना चाहूंगा, ये कुछ कर भी नहीं सकते, गेंदबाजी ज्यादा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है आज के जमाने में आपको बल्लेबाजी भी करनी आनी चाहिए। And it's a no ball. It is a no ball. And has been clipped off his pads. Oh, hacked the ball, hit the stumps directly. This could have been a run out as well. And it's going to be the no ball. And talking about extras, we keep on finding many extras being bowled, and today Iquasar software solutions have been great with the line and length. बिल्कुल सटीक लाइन के साथ आज गेंदबाजी की है इनके गेंदबाजों ने, और उनका फायदा इनको मिला है। आप देख सकते हैं मात्र 119 रन अभी तक बना चुके हैं। पहले प्रहार हुआ था, लेकिन उसके बाद हिम्मत उन्होंने नहीं हारी, अच्छी गेंदबाजी की, और इस बार खेला स्ट्रेट बैक टू बॉलर, और मात्र 1 रन मिलेगा वहाँ पे। फील्डिंग काफी कमाल की, और बॉडी लैंग्वेज आप देखिए और फिटनेस लेवल देखिए इक्वासर की अगर हम यहाँ से बात करें, उनकी फिटनेस लेवल कमाल की है। ये आप दृश्य आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप देखिए फिटनेस देखिए इस खिलाड़ी की कमाल की, और आज कैचेस भी काफी अच्छे लग गए इन्होंने। Indeed, that's a big difference between the two teams. If you're physically fit, if you give yourselves a bit of a time for your training sessions, you work hard in the nets as well, and if you have this kind of body language, and if you are just winning at the very top of that, I believe everything is going your way. Marks the end of over. 17 none. Titans 1-2-1 for 8. बिल्कुल ऐसे अवसर आपको बार बार मिलते नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको बार बार मिलता नहीं। आपको चाहिए परफॉर्म करना, कि काफी सारे लोग, काफी ज्यादा प्रशिक्षक आपको पीछे से बैक करते हैं, तो मुझे लगता है आपको खड़ा उतरना चाहिए उस पे, और उस प्रकार का आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए। ये मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे सेक्रेटरी टाइटंस की टीम को। And I believe Fadil was into the attack, and he was the man who just caught towards the half century on the very last ball. Full toss, still not using it properly and not taking the advantage of the same. और अगर हम यहाँ से बात करें हिटिंग, अगर आप करना चाह रहे हैं, डीप ऑफ द क्रीज खड़े हो सकते हैं, या आप कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो दोनों चीजें लैग कर रहे हैं अभी तहसीन की अगर हम यहाँ से बात करें। चले इस ओवर में एक और गेंद के साथ इस बार हल्के हाथों से खेला स्क्वायर के क्षेत्र में, और आराम से 1 रन मुकम्मल करेंगे। इक्का दुक्का से परेशानी नहीं होगी सॉफ्टवेयर की अगर हम यहाँ से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की अगर हम यहाँ से बात करें, उनको परेशानी होगी नहीं, इक्का दुक्का से परेशानी नहीं होगी, और आप बॉडी लैंग्वेज से भी काफी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये टीम की अगर हम यहाँ से बात करें, काफी खुश, काफी जोशो खरोश होगा इस टीम में, क्योंकि आज अच्छा परफॉर्म किया है। हर कोई डिपार्टमेंट आज के लिए किया अगर इस टीम की हम बात करें, और उसके लिए इनको दाद देनी चाहिए, और तगड़ी टीम है इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें। जी, and all the departments say they have been fabulous. Next ball goes down the track. Once again a great piece of fielding at the deep.
We were talking about real performances in all the departments, batted well, bowled well, fielded well, and they are having the results well. It's just a matter of time, they just bowl all these overs. और यहाँ से अगर हम तमाशाई की भी बात करें, काफी अच्छे दृश्य आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ से कैमरामैन को मैं कहना चाहूंगा कि दिखाए, तमाशाई भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और काफी अच्छा यहाँ पे ये टूर्नामेंट जारी और सारी है और तमाशे आ रहे हैं देखने के लिए। इट मींस कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा टूर्नामेंट है इनके लिए और आते हैं देखने के लिए और सपोर्ट करते हैं अपनी अपनी टीमों को। Indeed. और काम को छोड़ के आते हैं। Indeed, it's very much spectacular over here, especially in the evening time when we do get the match. A day-night match over here, we find a large number of crowd over here. So supportive, incredible, and keep on supporting this kind of format. And downtown Rajouri, Kadal, Srinagar, Gani Memorial Cricket Stadium is having the first of its day-night cricket tournament. Courtesy ANN News. और अगर यहाँ से बड़ी जीत अर्जित करेंगे तो इनके अगर हम रन रेट की बात करें वो भी इससे इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट है यहाँ से। Absolutely, and loud appeal for LBW. No, and you were telling it, if they get on to win this with around 100 runs, the run rate will be definitely above. It will be just giving them a top of the run rate, and they find themselves on the top of the table as well. Next ball is played it down to the backward square leg region. Easy pickings, and these pickings not gonna pick them up if we talk about the result of the game. बिल्कुल, और जितनी बड़ी जीत यहाँ से अर्जित करेंगे और रन रेट में भी इजाफा होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं बॉल देखो, काफी खुश नजर आया कि नबी की अगर हम बात करें स्लिप्स पे वहाँ पे मौजूद है। इस बार खेला है गली के क्षेत्र में, उमर आलम पीछे मौजूद है और एका दुक्का से काम चला रहे हैं। इससे काम नहीं होगा, आपको चाहिए था वो इंटेंट, हमें यहाँ पे आज नजर नहीं आया। अगर हम यहाँ से बात करें सेक्रेटरीट टाइटंस की, वो इंटेंट की कमी आज यहाँ पे नजर आ रही है हमें। Absolutely, intentions were not there. Even though for the first 3-4 batsmen they were trying to go and losing their wickets pretty quickly. That's why we are seeing better cricket from Software Solutions. 18.5 overs bowled. It's 1, 2, 8 for 8. Well, the 18.4 overs have been bowled. Next one goes down the track. Is it gonna cover it? I believe no. That's a wonderful catch once again. It was almost a collision between the two, but once again I will definitely applaud the catching of Software Solutions. That is indeed remarkable. No catch has been dropped so far, and if I talk about the best catching of the tournament, it will be definitely Iquasar Software Solutions. बिल्कुल, कैचिंग काफी कमाल की रही। रिप्ले में जरूर यहाँ से रिप्ले में देखना चाहूंगा क्या कमाल का कैच वहां पे लपका। और यंग टीम है, यंग ब्लड है, लेकिन प्रदर्शन आज कमाल का किया है और फील्डिंग काफी लाजवाब रही है और उसी का फायदा जिनको मिलेगा, एक बड़ी जीत यहाँ से अर्जित करेंगे। और नजी टाइगर आप देख सकते हैं अपने कोटे का आखिरी गेंद कर रहे हैं, क्या इसमें विकेट लेके 5 विकेट हॉल लेंगे? Well, he just has scored 4, and can he take the wicket on the last ball? And he may be, and if he does, he's surely going to be the man of the match. And here goes one of the senior most officials, senior most members of Secretariat Titans down to the ground. He walks out. मुझे लगता है यहाँ से 1-2 खिलाड़ियों को सर्कल में लाना चाहिए, प्रेशर बनाए ताकि यहाँ से 5 विकेट हॉल ले। Well, absolutely. Captain will have to come up with some more fielders inside the circle and straight away go for the attacking. करिए, आप अभी एक्सपेरिमेंट करिए, अभी एक्सपेरिमेंट की जरूरत है। यहाँ से 5 विकेट हॉल ले सकते हैं। 1-2 खिलाड़ी को थोड़ा सा क्लोज रखे ताकि थोड़ा बहुत प्रेशर आए बल्लेबाज पे और यहाँ से 5 विकेट हॉल लेने से टाइगर। And they go for the same field. नहीं, यहाँ से किसी भी खिलाड़ी को तेज करेगा क्या? इस बार अच्छा शॉट खेला, वहां पे क्या रन लेंगे? जी नहीं, आखिरी ओवर बचा है और जीतने के लिए 103 रन की दरकार, जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य है और बड़ी जीत आज अर्जित करेंगे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आबिद नबी को काफी खुश नजर आ रहे हैं। तमाम क्षेत्ररक्षकों की अगर आज बात करें, उन्होंने साथ दिया गेंदबाजों का और ये एफर्ट होते हैं आपको फील्डिंग की अगर हम बात करें, बैटिंग की बात करें, वहां से आपको एफर्ट्स देने पड़ते हैं और आज एफर्ट दे इस टीम ने, मुझे लगता है डिजर्व करते हैं यहाँ से। Absolutely, they do deserve. They have played wonderful cricket, best cricket I believe, genuine cricket. It went everything in their way, just kept, just won the toss, opted to bat first.
post a massive score on the board. Now bowling well. It's one. एक और एक्सपेरिमेंट हमें देखने को मिला है, एक और यहाँ से गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है और इस बार खेला है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में और 1 रन दौड़ के पूरा किया और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं ज्यादा वहाँ पे कॉन्फिडेंस में लाए पार्ट टाइमर को, इसलिए अब आदिल से गेंदबाजी करा रहे हैं। अब चाहिए 102 रन। क्या पारी रही थी आज इनकी, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, कमाल की पारी इनकी रही थी। तो 102 अभी भी जीतने के लिए चाहिए। क्या इस गेंद में काम तमाम करेंगे सेक्रेटरी टाइटंस का? चारों खाने चित कर दिए, वहां पे पड़ने के बाद थोड़ी सी मूव होती हुई गेंद, कांटा बदला गेंद और बल्ले का मिला नहीं हुआ, डॉट गेंद। कोशिश रहनी चाहिए ऐसे एक और विकेट प्राप्त करके। अंपायर के इशारे का वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, फजा में अंपायर ने हाथ बुलंद किया, अतर के रूप में 1 रन मिलेगा। क्या आदिल को एक विकेट मिलेगी यहाँ से? और ऑफसाइड क्या फील्डिंग दे सकते हैं, थोड़े से क्लोज खड़े हैं कि यहाँ से एक सफलता हासिल कर पाए। बाल बचे यहाँ पे, बढ़ने के बाद और बाहर निकलती हुई गेंद। क्या यहाँ से अगर हम बात करें 3 गेंदें बची है, क्या डॉट खेल के मुझे लगता है यहाँ से क्या पूरी पारी सिमट जाएगी? I believe Adil should get a wicket over it. If he gets, he will be very confident in the next game, and he thinks that he might be brought in the bowl as well. Down the track he goes, and that's a copybook style drive shot through the extra cover region. Still the ball, I believe, is not going to cross the fence. बिल्कुल वहां से उतनी पावर नहीं थी शॉट में। मुझे लगता है यहाँ से अगर गवर की बात करें, कोशिश कर रहे हैं कि 2 गेंदें डॉट खेले और 1 गेंद जो बची है ये डॉट गेंद खेले और इससे पूरी पारी नहीं सिमटेगी। अगर हम सेक्रेटरी टाइटंस की बात करें, आखिरी गेंद और ये देखिए सम्मान सॉलिड डिफेंस किया और यहाँ से अगर हम करें तो बड़ी जीत अर्जित की इक्वास्क्वायर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें, बहुत बहुत बधाई हो उनको। और यहाँ से अगर हम बात करें सेक्रेटरी टाइटंस की कोशिश रहनी चाहिए जो आगे आने वाले टूर्नामेंट है उसमें वो काम करे गलतियों पे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था और बड़ी जीत अर्जित की 99 रन से इस मुकाबले को इक्वास्क्वायर सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात करें, इस मुकाबले को जीत लिया है और हैंडशेक्स कर रहे हैं वहां पे आप देख सकते हैं। और शानदार दृश्य आपको नजर आ रहे हैं एएनएन न्यूज पे, ये बराह रास्त आप तक ये कवरेज हम पहुंचा रहे हैं। J&K क्वालिफायर लीग आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वहां पे सीनियर क्रिकेटर भी आज साथ है इस सेक्रेटरी टाइटंस का, लेकिन आज 99 रन से इस मुकाबले को जीता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की। अगर हम बात करें तो कुछ देर बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर और कॉन्फ्रेंस का बूस्टर का काम करेंगे इक्वास्क्वायर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की। अगर हम यहाँ से बात करेंगे और तगड़ी टीम है, इससे आपको बचना चाहिए आने वाले मैच के। और अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की अगर हम यहाँ से बात करें तो देखने वाली बात होगी आज किसको मैन ऑफ द मैच का, ये आप दृश्य आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से। और ये देखिए तमाशा की कसीर तादाद लंबी लंबी कतारें आज मौजूद थी गनी मेमोरियल स्टेडियम की अगर हम यहाँ से बात करें। और ये दृश्य आपको नजर आ रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं क्रिकेटर्स वहां से और तमाशा भी एंजॉय कर रहे हैं, धीरे धीरे मैदान के वस्त में नजर आ रहे हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन आज दिखाया है। अगर हम यहाँ से बात करें जो भी प्रदर्शन आज आबिद नबी ने दिखाया और उसके बाद साहिल शफी को क्रेडिट देना चाहूंगा, जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया वो कमाल का था। ये दृश्य आपको नजर आ रहे हैं और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की अगर हम यहाँ से बात करें हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। तो देखने वाली बात होगी किसको मैन ऑफ द मैच का यहाँ से अवार्ड मिलेगा। तो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये दृश्य आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से तमाशा की कसीर तादाद और आप धीरे धीरे तमाशाई भी अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं वहां पे दानिश को आप अगर साहिल शफी को आप वहां पे देख रहे हैं स्क्रीन पे और ये हमारे कैमरामैन है वहां पे। आप पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए बाबा निसार वहां पे ग्राउंड पे मौजूद है, तो ले चलता हूं मैं बाबा निसार के यहाँ। कैप्टन के कैप्टन
चेक करें। शेती Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm your English commentator, host of this post-match presentation. It was the match number 15. It was a Pool D match. And the match was fought between Iquasar Software Solutions and Secretariat Titans. Eventually, Iquasar Software Solutions just eased with the win over here. So I'd love to request everyone single over here, please come up with a big round of applause for the victory of Iquasar Software Solutions. Big hands, please. We've got the two captains over here. First of all, we would love to have a talk with the Secretariat Titans captain, Mr. Asif. Please come to the front and have a talk with us. Asif Saab, tough luck. 2 losses on the trot. Your words, please. Yes, we tried our best, but we couldn't make it to the finals today. The score was a little bit higher, 237. We have 231. We have to chase. But in the beginning we did well, but due to collapse in the middles, we couldn't make it. You know, if we talk about your 2 losses on the trot, now you have got one more match if we talk about that very pool. But you find yourselves on the bottom of the table. You believe still you can be back, but for that you will have to play some kind of aggression in that kind of a match. We will not play for the points. We will play just normally and hope for the best. And tough luck today and best of luck for the future. Thank you. And now, the winning captain of Software Solutions, the man of Srinagar, Mr. Umar Alam, please come to the front and have a talk with us. Umar, good toss to win, good score to pose, and a good win to have. Alhamdulillah, very good win, and it was a comprehensive effort. We batted well, we fielded well, we bowled well. And talking about got as far as Abid Bhai is concerned, but then it was given a bit of a shave by Sahil, and finally the Adil, the kind of a shave he just gave it, that was a finishing touch. Yeah, absolutely. We have got a blend of youth and experience. We have at the top you have seen us, Abid and Sahil playing. We have been playing together from past 10 years now, and this team is balanced, and you will see a new version, inshallah. We have got some youngsters as well, but they are not getting the chance right now, and inshallah in the near future you will see them as well. Just finding yourself on the top of the table, you know, it's kind of a releasing moments and easing moments for you. I believe now you will be finding pretty relaxing yourself and to get on the top of the table. You can't relax in these kind of tournaments. All the teams are very good, and you see players like anybody can score. You have seen the start they got, and it could have been, if they prolonged the start, it could have been a difference. But nevertheless, we fielded very well, and the fielding is the main part of this cricket these days. And in 2020, you give a chance to a batsman, he scores 100, and that's the thing we don't want to give. We have got a good fielding unit, and we try to put our best show here. And talking about the initiative that has been started by ANN News, you believe it's a good platform, the young buds as well? Yeah, it is good. There are some limitations. I think it could have been better on the turf wicket if we had played, because we lack that only. We play on matting, and for future, for this grassroots, the turf wicket is very important. Hope to have the turf in the future as well. Thank you. Thank you very much, Umar Alam, the Iquasar Software Solutions. And now it's the Fashion Fiesta Man of the Match. I would love to request Mr. Akif Saab, editor ANN News, please come to the front and he will present the Man of the Match award. A couple of great performances if we talk about Iquasar Software Solutions team, but finally it's Mr. Sahil Shafi who batted beautifully for a 67 of 39 balls, and he is the Fashion Fiesta Man of the Match, being presented by big hands for Sahil Shafi, please. Thank you. Sahil, few words please. A very smiling moment, a very happy moment for him. मेरे ख्याल से जिस तरीके से आपने इनिंग्स को बिल्ड अप किया आबिद भाई के साथ, और बेहतरीन फिनिश और बेहतरीन विन जो आपको मिली, उसके बारे में प्लीज बताइए। जी, इनके साथ मैं पिछले 10 साल से खेल रहा हूँ और पता भी इनके साथ कैसे खेलना है, और ये क्रिकेट दिन पे होता है, जिसका दिन होता है वो कर देता है। गुड डे एट योर ऑफिस। यस, बहुत बढ़िया। एंड टॉकिंग अबाउट दिस मैन ऑफ द मैच, यू बिलीव इट्स अ वेरी वंडरफुल मोमेंट, क्योंकि जिस तरीके के आपके टीम में बड़े एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, मेरे ख्याल से रांची प्लेयर्स भी खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छा एक्सपोजर आपको मिल रहा है। जी, बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। बड़े हमारे से बहुत सीनियर प्लेयर है और अच्छे से समझाते भी और खिलाते भी हैं। टाइम टू हैव फन इन द डग आउट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
The man of the match, if we talk about this match number 15, that's all what we have from the post-match presentation. We'll be back tomorrow for the match number 16. Till then, you enjoy your time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.